आप सबकी दुआओं से लड़का पहली बार जा रहा है यूरोप। इनविटेशन आया है डेनिश एम्बेसी से टू लर्न अबाउट देयर ट्रांजिशन टू ग्रीन एनर्जी। सो लेट्स गो। Sacrifice my life for Pakistan. Denmark is one of the leading countries in green energy, जिसका मतलब ये है कि इनकी 50% इलेक्ट्रिसिटी विंड और सोलर पावर से जनरेट होती है। एंड बाय 2030 they are planning to generate electricity completely independent of fossil fuels. इसीलिए डेनमार्क को दुनिया की लेबोरेटरी माना जाता है फॉर ग्रीन सॉल्यूशंस एंड हाउ टू टैकल क्लाइमेट चैलेंजेस अराउंड द वर्ल्ड। और क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त एनर्जी और क्लाइमेट क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ आया हूँ कोपेनहेगन, डेनमार्क, टू एक्सप्लोर एंड लर्न ऑन हाउ दे हैव ट्रांजिशन सक्सेसफुली टू ग्रीन एनर्जी व्हाइल क्रिएटिंग सस्टेनेबल लिविंग फॉर एवरीवन। और पैदल एक्सप्लोर करने से तो मैं रहा नहीं, सो सबसे पहले मैंने बाइक रेंट की। ये आपका आ गया। थैंक यू सलीम भाई। ऑलराइट, टाइम टू गेट द बाइक्स। ठीक है ना, क्योंकि बहुत चल रही है हमने पिछले एक दिन से, अब यहाँ पे सिर्फ एक दिन ही हुआ है। बट बाइक जो है ना पूरी तरीके से सेलेक्ट करनी है, क्योंकि इसी पे जो है ना बाकी 6 दिन गुजरने हैं। आई एम गोइंग फॉर दीज नाइस रेट्रो लुकिंग वंस। ब्राउन कलर भी है और सिर्फ 1 महीना हुआ इनको आए हुए, तो सारा अच्छी कंडीशन में होंगे। लेट्स टेस्ट देम आउट। यस, लेट्स गो। Biking is so essential to the Danish DNA and way of life that they've built their cities around it. So यहाँ पे जो है ना साइकिलों को इन्होंने ज़्यादा बड़ी रोडें दी हुई हैं और गाड़ियों को कम। ये लोग ज़्यादा डिस्करेज करते हैं कि यार गाड़ी वाला ख्वार हो और वो भी साइकिल पे शिफ्ट हो। Thanks to these dedicated cycling lanes and super biking highways, there is a decrease in cars by 10% and an increase in biking by 20%. और इसके साथ साथ इन्होंने गाड़ियों की स्पीड लिमिट कम कर दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल का इस्तेमाल करना शुरू करें। एक ज़माने में जो है ना ये इंडस्ट्रियल एरिया होता था और ये सारा इतना गंदा पानी होता था कि कोई इसमें नहा भी नहीं सकता था। फिर 1990s में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया टू क्लीन अप द वाटर, और आज आप यहाँ पे नहा भी सकते हैं, फिशिंग भी कर सकते हैं और वाटर स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। लेकिन डेनमार्क की ग्रीन ट्रांजिशन में लोकल की क्या कंट्रीब्यूशन है? Biking, taking the metro. We both don't own any cars, so I think that's also another thing. Not when going to a grocery store, always bringing a duffel bag and never buying plastic bags. So I think those small things are the ones that we're contributing with. बाइक से कम्यूट करना सबसे आसान, तेज, मोस्ट हेल्दी और एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका है टू एक्सप्लोर द सिटीज ऑफ डेनमार्क। और यहाँ के रहने वाले जो बाइक से कम्यूट करते हैं वो 1.1 मिलियन फ्यूअर सिक डेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और उसके साथ साथ साइक्लिस्ट रिड्यूस CO2 emissions by 20,000 tons a year on average. And here's the best part, ना ही आपको लाइसेंस की जरूरत होती है और ना ही पार्किंग ढूंढने के इश्यूज। Just grab a bike and start helping the environment. That's right, and I'm from New Zealand, but I've been living in Denmark since 2018, and one of the things that came to life for me was the use of sustainable energies, the use of new technologies within the home, and also for transportation, where they find innovative ways of using renewables and pedal power, as we are doing with our hydro bikes. Yes, amazing. पिछले 40 साल में डेनमार्क की इकोनॉमी 80% ग्रो की है, while controlling their demand for energy consumption and creating new climate-friendly energy sources like the Copenhagen. स्नोबोर्डिंग करने के लिए हम आ गए हैं। बर्फ़ यहाँ पे है नहीं, but it's on. It's on. This is where I feel at home.
congratulations on getting married. Thank you. I've been married for 2 years. Do you want me to share my notes with you? Yeah. Don't do it. So ये जो है ना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, और जो ये पीछे धुआं निकल रहा है ना, ये इतना साफ़ है कि जो स्ट्रीट्स में हम धुआं इनहेल कर रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा साफ़ है। मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट, और उन्होंने बिल्कुल सेंटर में बनाया है ताकि सबको नज़र आए कि भाई ये है आवर क्राउन एंड जूल। और अब हम इस पे जो है ना यहाँ से स्नोबोर्डिंग करेंगे। कोपेनहेगन में वो सारा ट्रैश बर्न होता है which can't be recycled, generating enough heat and electricity for 15,000 homes in the area. And by incinerating waste to produce electricity and heat, the 4.4 million square foot power plant releases less carbon dioxide into the atmosphere than it would if it burned fossil fuels. इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार, कचरे का मसला भी खत्म और बिजली का भी। एक ऐसा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पाकिस्तान में लग जाए, मजा आ जाए। Copenhagen hopes to become the world's first zero carbon capital city by 2025. So, यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स रह रहे हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, और उन्होंने अभी हमें अपना टूर भी दिया घर का। इतने खूबसूरत घर बने हुए हैं अंदर से। सोलर पैनल्स के जरिए अर्बन रिगर्स अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करता है, becoming a self-sustainable and affordable living space for students. These containers are a great example of upcycling, जिसका मतलब है giving old things a new function while they are no longer in use. जैसे कि ये कंक्रीट साइलोज जिनको रिकंस्ट्रक्ट करके ऑफिस बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, मेकिंग these structures not just self-sustainable but also multi-purposed. जैसे कि ये आउटडोर जिम जो कि एक कार पार्किंग की बिल्डिंग के ऊपर बनाई गई है, completely out of recycled rubber. एक और एग्जाम्पल मल्टीपर्पज स्पेस की ये हॉकी और स्केट पार्क है, जो बारिश के वक्त में एक रेजर्वोयर की तरह काम करता है टू स्टोर वाटर which can be later reused. We definitely need one in Karachi. Okay, I sort my trash, so in plastic and in food and in metal. The trash we sorted into different containers, like with plastic and metal and stuff like that. And then I take my bicycle everywhere. I don't take the train and I don't take the car. Like don't expect like politicians and things to deal with this. Like change starts with like every person. We need to start rethinking on how we consume everything, from our food to power. Change has to start somewhere. Maybe it's time we all change. We're all in a paper chase. One by one we're losing the race. All in a paper chase. One by one we win this race. Yeah. कोपेनहेगन की नाइट लाइफ तो मैंने आपको दिखाई नहीं। लकीली हर साल कोपेनहेगन में एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है डिस्टॉर्शन के नाम से, और मेरा दोस्त वकास was kind enough to get me access to his concert. और इतनी मेहनत के बाद पार्टी तो बनती है। Let's go. People be ready to die. For the diamonds and the glitter desire. All this glamour is only for hire. Best I'm flashing with blind. It will never be taking me higher. It's an illusion of Fata Morgana. We're all in a paper chase. One by one we're losing the race. All in a paper chase. One by one we win this race. All in a paper chase. One by one we're losing the race. All in a paper chase. One by one we win this race. Yeah. I can't allow myself. ओए होए होए देवी और सजनों, मतलब नीचे लोग खड़े थे, कहते हमारे अम्मी अब्बू जो है ना आउटलैंडिश के कॉन्सर्ट में मिले तो उनकी शादी हो गई थी। सर आप तो रिश्तेदारियां बनाते रहते लोग। ये उम्र हो गई कि लोग कहते हैं कि हमारे वालिदैन आते थे। सर लेजेंड्स ऐसे नहीं बनते, बट व्हाट एन एनर्जी, मजा है। सर मैं कहता हूँ थैंक यू यार, क्या एक्सपीरियंस दिलाया है, मतलब डेनमार्क का मजा तो अब आया है। One by one we win this race. All in a paper chase. When I first got an invite from the Danish embassy, मैंने सोचा फाइनली यूरोपियन कंट्री में पार्टी करेंगे। But I had no idea on how much this trip would change my perspective on how we live every day. It's a nice world we've got here, so let's make it last.